of its own kind because of its topography to start with. Sitting on a hill, there are not very many mosques that makes a big difference. And the other is scale. It is larger than most mosques, so the scale is quite grand. And the third thing is this quality of openness and breeze and the sense of spirituality in the geometry. So it's a formulation of a round space, then an octagon. The octagon is surrounded by squares, and between the squares are triangles. वो triangles को हमने कट करके स्पेस लिए, उसमें से रोशनी ले जाके नीचे बेसमेंट में जो पार्ट है मॉस्क का, उसमें नेचुरल रोशनी जाती है, क्योंकि ऊपर मर्दों की मॉस्क है, वो नमाज की जगह है, और नीचे ख़वातीन की है, औरतों का पूरा सेक्शन है. इस्लाम की सारी स्पिरिट एक ही नुक्ते पे जाके रुकती है, दैट इज़ डिविनिटी और वहदत जो है उसके ऊपर. तो वो जो नुक्ता एक है, इसीलिए आर्चेस भी पॉइंटेड हैं, पॉइंटिंग टूवर्ड्स द हेवन. सेंस ऑफ डिटेल है, जैसे कैलीग्राफी है, इसकी आर्चेस हैं, इसके कोर्ट यार्ड्स हैं, इसके तालाब हैं, इसके फव्वारे हैं, वो सब मिल के एक फ़िज़ा क्रिएट करते हैं. द इंटीरियर ऑफ द मॉस्क इज़ बेस्ड around shamadans, while the exterior is floodlit with modern concepts of lighting. The Minar in Karachi, the demand was that it should be very, very high, so that that landmark can be seen from miles and miles away. We designed it for one Minar, which is over 250 feet high. Luckily, we have local stone available, which will make the mosque emerge in a harmony with that terrain and with that locale. It has a museum, it has a grand library, it has got research centers, it's got a calligraphic school. So, end of the day, it will be a complex. What we build today is heritage for tomorrow.